वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं 10 मिनट्स ऑफ योगा फॉर वेट लॉस। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एंड हम आज शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस इन क्रॉस लेगेड सीटेड पोजीशन सुखासना में और अपनी सांसों को थोड़ा सा महसूस करते हुए। कपल ऑफ डीपर ब्रेथ्स हियर, इनहेल एंड एक्सहेल, then slowly and gently bringing your hands up and folding forward. इसी तरह से हाथों को स्ट्रेच करेंगे इनहेल और एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे फॉरवर्ड। ट्राई करेंगे कि पैरों को ज़्यादा ना हिलाएं, अपने हिप्स को ज़्यादा ना हिलाएं। जैसे इनहेल करेंगे अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे और फॉरवर्ड करेंगे। एक्सहेल करते हुए हाथों को पीछे लेंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच द हैंड्स एट द बैक और इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट अपनी बॉडी को, राइट साइड and then left side. You're just warming up right now. थोड़ा बहुत just warm up, moving the body, right side, left side. Inhale, exhale करते रहेंगे. No stopping the breath. Practice is all about movement. So here I am doing little bit of twist. अपनी spine को थोड़ा warm up कर रही हूँ मैं. हाथों को thighs पे रख के you're going to look towards your shoulder, whichever side you are turning. Okay, जितना हो सके आप उतना turn कर सकते हैं. You're just warming up right now and keep breathing. Now slowly and gently you're going to come up to standing position. So इस तरह से धीरे धीरे move करके आप अपनी standing position में अपने पैरों को 2 feet, 2.5 feet apart and then hands in start position. You're going to just bend side to side. एक तरफ एक बार राइट साइड एंड देन दूसरी तरफ लेफ्ट साइड। इस तरह से आप मूव करते रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए बेंड, अगेन इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ बेंड। नाउ यू गोइंग टू फोल्ड फॉरवर्ड, तो अपने राइट साइड में इस तरह फोल्ड करेंगे एंड देन इनहेल लिफ्ट, देन लेफ्ट साइड फोल्ड, इनहेल लिफ्ट। ये प्रैक्टिस हम थोड़ा सा ऑब्वियसली बिगनर से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा पेस हम पकड़ रहे हैं बिकॉज अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ फैट लॉस हेयर। तो अपने ब्रेथ को और अपने मूवमेंट्स को आपको अलाइन करना पड़ेगा एंड यू कैन डू दिस पंपिंग। सो यू गोइंग टू इंटरलॉक योर फिंगर्स, लेग स्ट्रेट रखिए, आप होल्ड कर सकते हैं अपने थाइस को, नीज पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, यू जस्ट पंप 1 2 3 and 4 like that. So inhale, you come up again, start pose here. Now you're going to twist. So अपने right hand को left पैर पे, फिर up and then left hand को right पैर पे and फिर up. इसी तरह से you're going to inhale, come, exhale, twist, inhale, come and exhale, twist. आप इन repetitions को बढ़ा भी सकते हैं. Okay, you can just pause the video and repeat it once again and do the same thing. Okay. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू टेक योर हैंड्स बैक ऑफ योर हेड और इस तरह से पल्स करेंगे फॉरवर्ड। नीज को स्लाइटली बेंड रखना है, पूरा स्ट्रेट नहीं रखना। यू कैन जस्ट कीप पल्सिंग डाउन एंड अप एंड देन स्लोली इनहेल, कम बैक अप। ऑल दिस फर्स्ट just to warm up your body. Okay, and now we will do a little bit of stretches. Taking the right leg forward, you're going to half lunge and then come up. Half lunge and then come up. Inhale, straighten your hands up and continue doing the same thing. Half lunge and just hold the pose. You can do the drill of keeping the back knee, touching the back knee down on the mat and lifting it up. Okay, stay there. Then exhale, पीछे वाला leg आगे ले लेंगे और करेंगे एक छोटा सा बैक बेंड। हाथों को इस तरह से हिप्स में रखते हुए and then we'll do the same drill on the other side. So right leg you're going to take it back, left leg forward and इस तरह से you're going to drill down and up. Okay, so you're going to go down and up, down and up. अपने हिप्स को स्क्वायर यानी हिप्स स्ट्रेट रखिए। हिप्स आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए या ट्विस्ट नहीं होना चाहिए राइट साइड पे या किसी भी साइड में बेसिकली।
And again, you're going to inhale and take your hands up and do the same drill, back knee touching almost down to the floor and lifting it up. Okay, and then slowly exhale, release the hands, bring the leg forward. Now we are going to go for a forward fold position. So you're going to bend down. नीज को आप स्लाइटली बेंड रख सकते हैं या तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं अगर आपकी बॉडी वार्म अप हो चुकी है. अदरवाइज just for the knee health, you can slightly bend your knees. Again, you can hold your toes and then take your body closer and up as per your practice. Okay, keep breathing. Let's practice some goddess pose. Very helpful for our inner thighs. So इस तरह से अपना सुपर स्क्वाट करेंगे. ठीक है, ट्राई करेंगे कि अपने हिप्स जो हैं आप पैरेलल ले आएँ फ्लोर की तरफ. इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे. बॉडी को टाइट रखेंगे और बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे. ड्रिल्स करते रहेंगे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे. और अब करेंगे थोड़ा सा पल्स यहीं पे. I know the inner thighs will be burning right now, but that's only good for our thighs. हाथों को thighs के ऊपर रख के आप कर सकते हैं थोड़ा सा twist, which is really good for opening up of your inner thighs, for your abductor muscles. आपके hamstrings के लिए, quadriceps के लिए भी बहुत अच्छा है ये. Also अपने आप आपके calf muscles पे भी काम करता है, which is very good. Now you're going to bend side to side. So अपने हाथों को इस तरह से पीछे रखेंगे and अपने knees के पास अपनी elbows को टच कराने की कोशिश करेंगे. So एक साइड, फिर आप लिफ्ट करेंगे and then दूसरी तरफ. Couple of breaths. Remember, you can repeat these exercises. Okay, you can just pause and you can just repeat these exercises. Very good. On your last drill, on one side, you're going to keep your hand down on your leg और दूसरे हाथ को इस तरह से stretch कर देंगे और दूसरा वाला leg भी आप straight रखेंगे इस तरह से. Let's take a couple of breaths here. And then slowly and gently bring the hands, deep lunge towards the same side. जो भी पैर आपका fold था पहले. Slowly and gently, you can come up and take one deeper breath here. दूसरी तरफ same practice, elbow to knee. धीरे से अपने हाथ को नीचे रखेंगे. दूसरा वाला पीछे जो leg है उसको straight करेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से stretch करेंगे up towards the sky. You're going to hold the pose. Keep breathing. Slowly and gently bring the hands next to your bent leg. Deep lunge. Keep breathing. Keep opening your inner thighs. Now slowly and gently to come back to standing position. हाथों को इस तरह से अपने हिप्स के ऊपर रखे थोड़े हिप रोल्स करेंगे हम. सो लेग्स विल बी 1 foot डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इस तरह से धीरे धीरे योर स्पाइनल मूवमेंट्स टुवर्ड्स साइड एंगल एंड देन स्टार्ट रोलिंग योर हिप. इस तरह से हिप रोल्स करेंगे आगे पीछे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. कीप ब्रीदिंग. जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे इस पोजिशन में. You're just trying to cool down the body. Inhale and stretch the hands up. Exhale करेंगे, try करेंगे मैट को बिना टच किए हुए इस तरह से नीचे आए. बटरफ्लाई पोज में अपने लेग्स को खोलें, अपने नीज को ऑपोजिट डायरेक्शन में, फुट को एक दूसरे के अगेंस्ट एंड फॉरवर्ड फोल्ड. So you're going to try to open the hips. अपना हाथ gently you can pressure, बहुत gently
ओके, नीड नॉट टू प्रेशर टू हार्ड, जितना हो सके उतना प्रेशर करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे और आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल आपको लगे आप वहीं पे रुक सकते हैं थोड़ी देर। जस्ट रिलैक्स कीजिए अपने एल्बोज़ को या अपनी पूरी बॉडी को। अगर आपका पूरा बॉडी नीचे आता है तो पूरी बॉडी को, अपने चेस्ट को नीचे फ्लोर की तरफ लेके आएंगे और रिलैक्स करेंगे हेयर। आई एम गोइंग टू टेक माई टंग आउट एंड ब्रीद आउट कम्प्लीटली। इनहेल करेंगे और एक्सहेल टंग आउट एंड ब्रीद आउट ऑल योर स्ट्रेस हेयर। 3 बार। Couple of deeper breaths and slowly and gently straighten your spine, and at the last you're going to lift the head up and exhale here. Very good. Just before wrapping up, a simple sa twist to the right side. Keep breathing, and you're going to do the same thing on the other side. Make sure the spine is straight, the hand at the back is relaxed. Okay? And you're going to take power from the hand which is pressing the thigh to twist your body more. Thank you so much for being here, for practicing with me. It was just a 10 minutes practice for fat loss. थोड़ा सा fast pace था, but that's how it will help. मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।